अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की समाअत जारी है। चीज वी फिनिश आप लोग अपने को एलोकेट देख लें स्ट्रक्चर हाउ यू वांट टू डू इट दीस आर द 2 days only we'll work it out conclude on 26 why is everyone standing here? No, but what I think sorry, this is and this can be decided on the 24th. I mean, why is only council are entitled to come to the rostrum? Can be decided on the 24th because I understand there won't be any other cases and just this case. So 24th, 25th they give you 2 full so working till break, if the councils for the petitioner appellants can conclude till break, and then we can proceed. We get a day and a half. Could I request the team, the councils, to talk to each other? These are the 2 days you have. Allocate your time so that you finish it. So respondents will do it on their end. मैं अभी बता दूं, I will conclude by 10:30. आप जरा सलमान साहब से भी बात कर सकते हैं। आपस में तो ऐसी भी बात कोई कर सकते हैं, नाराजगी टाइमिंग किया नहीं वो अब तो ये है कि because 10:30 करनी है 2 hearings. then they don't get enough Mr. time. Attorney General, all I'm saying is that you can talk to the council for the petitioners also. You are and really work out a nobody plan before the courts. for 2 days. We are still indulging you. इतना नहीं करेंगे, indulge में आप भी करें और फिर मैं 3 घंटे लगाऊंगा। इसमें लिखिए no, that's not, sir. We have to be mindful of other cases also. इसमें लिखिए it is now past 2 p.m. Mr. Learned Mr. Faisal Siddiqui continues with his submissions and assures us that he will conclude within if he is granted 1 more hour, full stop. Come up on Monday 24th June 2024 at 9:30 a.m. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. वो हम ऑफिस को इंस्ट्रक्ट कर देंगे unless there's already some date by court or something like that ये 1-2 दिन केसेस ना लगाएं। And if I may say so, for the full court, advance Eid Mubarak to Eid Mubarak to all lordships. To you, my lords. Eid Mubarak, sir. If you could also file what you want to file in advance so that we have the benefit of it before. अगर आप Mr. Rajay, if you want to file legal submissions, we can read them also. he's looking very depressed. You can, that will save time also. Mr. Salman Raja, please cheer up. Eid is Sir, coming he's up. personally aggrieved. Mr. Makhdoom Ali Khan, are you in this case? There are serious issues here. Mr. Makhdoom Ali Khan, are you in this case? My Lord, We will hear you. Who are you representing? My Lord, I am representing respondent number 17 onwards, the women who have been Affected. Affected. So, एक आप में और जब political parties भी कुछ articulate करेंगी, if you want to articulate something, please, for your sake and for our benefit, it will save time also. We'll try to keep they will try to keep structured. I think both sides. I am 27 days, so I think they should what Justice Shah has proposed. I think we should be very economical with our time, knowing that the case has to be Now you got some period to articulate your thoughts and put them concisely. It's a great occasion to fix timing, which we Supreme Court of US does and other countries do. We could just have half an hour or so. I would reiterate, you have to think about it. We'll do as we'll go by what you tell us. चलें, thank you. Thank you, sir. Thank you. Very grateful. Very grateful. मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी थी। 24 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। 24 जून से केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से बराह रास्त समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है बल्ले का निशान किसी को अलॉट नहीं हो सकता? इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला? क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने इस हवाले से दलाइल दिए। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी निशान पर इंतखाब नहीं लड़ सकते थे? ये तमाम तर सवालात उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से समाअत बराह रास्त हुई, जिसको 24 जून तक अभी मुलतवी कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून को होगी और इसके बाद इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा।